भाई, मतलब बहुत crazy job. And obviously I've learned a lot from him in terms of content and जो भी वो बात करते हैं, it really hooks people. So today we have with us Kishore Rabha. थैंक यू So सो मच। yes, इतना ज्यादा welcome. तारीफ कर दिया तुमने, बाप रे, टू And मच। bhai, literally speaking, bhai, Kishore is also from Northeast, from the same state, and I think that's also there कि भाई हम लोग में that brotherhood का एक feeling बहुत अच्छे से आता है. That फॉर it श्योर। makes me really happy to see someone who's grown this much. So welcome Kishore, welcome to the session. We थैंक can यू get सो मच started, फॉर हैविंग मी। but before that, I would love to know a bit about you and how your content journey has been. So जिनको नहीं पता किशोर राभा कौन है, just tell them about yourself. ओके, सो एक्चुअली इंस्टाग्राम में कंटेंट बनाना आई स्टार्टेड बैक अराउंड 2019। तो उस टाइम पे जो ऐसे मोटिवेशनल काइंड ऑफ पेजेस थे ना, दे वर हाँ, पॉपिंग अ लॉट। देयर इज वन वेरी बिग वन कॉल्ड मिलियनेयर मेंटोर। सो yeah. आई, if you guys have seen it, like I used to follow him a lot, and there were some several other ones as well. तो मैंने सोचा like I was in college and I thought कि यार I should like start earning some money, maybe this is a good way to do it. तो मैंने खोला and then it didn't work out. Tried some other pages as well. फिर उसमें से एक मैंने create किया a crypto theme page. I still have it, but it's inactive now. It's called Crypto Hike. So how I started that was कि मैंने देखा कि like millionaire mentor and other niches में like they were packed, like it was very saturated. So I thought कि I should start somewhere where there are not a lot of people already. So that was my thinking. And उस time पे the biggest crypto theme page only had 15,000 followers. बाकी niches पे they had 2 million followers, 1 million follower, 3 million. But 15,000 is like, it's nothing, right? हाँ हाँ. So मैंने सोचा, hey, this is such a good opportunity. और उस time पे there were like only 4 to 5 pages and my page was like the 6th or 7th page. And that's how like that page took off, and then I like started understanding how the algorithm works and all that stuff. So that's basically how I started creating content. Then I got into crypto, web3, made like an NFT collection. वो भी मैंने एक दूसरे बंदे के साथ बनाया, उसका भी एक crypto theme page था, and now we work together at Merkle Labs. So that's basically my story. Crazy, crazy. I think Kishore, you have also started a community at school, right? Yeah. So would The you like to main talk a bit goal about of that that also? community is like cryptocurrencies, Web3 के बारे में लोगों को इतने अच्छे से मतलब कुछ भी पता नहीं है. Like people think that Web3 or cryptocurrencies is just putting money into a meme coin and then expecting it to go up and that's how you make money. But that's like not it, to be honest. Like maybe I made a couple $1,000s trying to trade coins, but that's it. वो तो like मेरे साथ बहुत सारे scams. Oh fuck. Current चला गया क्या? Power cut. कोई Give me नहीं, one कोई second. Backup no line off. problem, no problem. So guys, Kishore is not just on social media. He also talks about Web3. He talks about cryptocurrency, uh, and he also is starting to teach a lot about all of these topics Yeah. on his community on school. So if you follow him, yeah, I think you can join the if you go Yeah, to. if you guys are interested in learning more about like Web3, how to make money in Web3, you can definitely join it and check it out. Yes. Okay, so you were saying something, Abhi. Like people think that the way to make money in Web3 is by investing money and then for it to grow, and then you take out the money and you make a profit. But the best way to is actually build something on Web3. For example, like AI, people are building stuff on AI, learning AI. Yeah. Web3 is also a very vast and interesting topic where a lot Mm-hmm. of finances are also involved. Yeah. So, and it's very, very underrated and people are not understanding about the opportunities that are there. So that's my goal with the community, to educate people about Web3. Okay. So let me tell you. Let's do some Q&A first, right? And then we'll jump onto the section of judging Yeah. people's videos. I would love to understand what motivated you to start content creation, and what was the first struggles that you faced? To be honest, it started out of frustration. क्योंकि like I was like, yeah, like there is so much, like people are mainly providing information, right?
like people are not building personal brands, and there are like so much dumb stuff out there. Like it was Yeah. frustrating me so much. तो मैंने Hmm. सोचा यार, like I have done so much, I have so much experience in a lot of stuff. I have tried out so many things, clothing brand, Airbnb business, trying out a cafe. I thought ki like why am I not starting to show my face and create content, right? Like और Hmm. मैं ये 1-2 साल से ही सोच रहा था. And to be honest, even I was insecure about showing my face and creating content. But Hmm. one day I thought that enough is enough. I think I should share my opinions. And then I just did it one day. I didn't Yes. even think that I would get so many views, so many, to be honest, like so many followers so soon. Yeah, and that's basically. Okay, tell me how fast did you grow? Like I think people don't know how fast you actually grew. मेरी आंखों Yeah, के सामने you have like whoosh, like a rocket. yeah, So yeah. tell us about your growth journey. कैसा रहा वो? ओके, सो मैंने अपना कंटेंट अपने पर्सनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ही डालना शुरू किया. सो आई हैड 700 फॉलोअर्स इन द बिगिनिंग, एंड दे वर ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, हाँ कॉलेज, हाँ. एंड लाइक माय रिलेटिव्स एंड स्टफ. So Yes. in the beginning, I thought कि I had, oh no, this is a different topic. Let me talk about how I grew so fast. Okay, Okay. so पहला वीडियो मैंने डाला था, I think about some about a clothing brand. जो Mm-hmm. मैंने स्टार्ट किया था ना कि don't start a clothing Yeah, brand. yeah, yeah. I remember the video. हाँ, I think. हाँ. And उससे शायद maybe I got around maybe 2 दिन में maybe I reached around 10,000 followers. Crazy After भाई. that, I made around 3 videos, and one video like got 8 million views or something. So अराउंड 1 वीक में ही मेरे 27,000 फॉलोअर्स हो गए थे, एंड अराउंड 1 मंथ में आई गॉट टू 50,000, एंड 2 मंथ्स में 70,000, एंड नाउ इट हैज बीन लाइक फोर मंथ्स आई गेस. नाउ इट्स एट 109. भाई क्रेजी भाई, मतलब 100 more than 100K फॉलोअर्स इन 4 months. तो भाई जिसको भी लगता है ना कि भाई इंस्टाग्राम पे ग्रो नहीं कर सकते, आई थिंक यू जस्ट नीड द राइट स्ट्रैटेजी एंड यू जस्ट हैव टू हिट दैट थिंग. और भाई फिर ग्रोथ तो ऐसा 10x के आसपास हो जाएगा. इवन फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड, आई ऑलमोस्ट ग्रू लाइक 10K फॉलोअर्स इन जस्ट अ वीक. तो वो एक बार क्लिक होता है, यू अंडरस्टैंड अच्छा ये चलता है, एंड देन यू स्टार्ट यस. बट. So how did you experiment with different formats? ये तो हमको बताओ कि because when people start, people are very confused about what should I do, what should I post. मुझे नहीं पता कि topic कहाँ से आएगा. So would you like to say something about all of these problems? To be honest, मैं थोड़ा like I consider myself a little bit lucky. Not exactly lucky, because हाँ. the result, like my video is an output of all my combined experiences in my life, right? Yeah. So like I have been through a lot, I have tried a lot of businesses, lot of things, and that experience has enabled me to talk stuff that people relate to and are able to be like, okay, like this guy knows his shit, right? But like for someone who is starting out, I would suggest them to experiment as much as possible with different kinds of formats. Or a big suggestion that I make is like follow foreign creators. अगर तुम मेरा feed देखोगे, 60% of my feed is from people outside India. Because क्या होता है कि especially US creators, they start creating these trends, they come up with different formats, and like around 1 साल बाद वो इंडिया में आता है. So if you are already consuming that content, you already have that info inside your head. Yeah. So you can experiment with a lot of different formats, and these formats are working in the US. That is That's proof that right. it's working in India as well. You have an instant edge over your other Indian competitors. Definitely, So definitely. हाँ. yeah, like मैं नहीं कह रहा हूँ कि Indian creators are bad or anything. I'm हाँ. just saying that US creators are one step ahead of the game, in my opinion. डेफिनेटली आई फील द सेम, क्योंकि यूएसए के यहाँ पे ट्रेंड आने में 3-4 महीने लग जाते हैं. हाँ, अभी तो आई थिंक द मिनिमम टाइम इज लाइक ऑलमोस्ट 1-2 महीने लगता है. बट स्टिल आफ्टर दैट यू स्टार्ट सीइंग ऑल द ट्रेंड्स being changed into the Indian format, and then once you catch it, it's very yeah. easy to I think work with all of these things. Okay. A big example is streaming. Like streaming is so big in the US right now. We have Yes, yes, Kaizen, we yes. have iShow Speed. India में you can hardly name any big streamer, right? And I think that shift is coming over here as well.
So that's an example as well. Yes, I see a lot of. I think you also met Rachit through. Uh, Yeah, yeah, yeah. well, He is one of the biggest streamers, I guess, in India. exactly, exactly. So, how was the experience with like meeting him? What did you learn from him? Because obviously, definitely, being in the space for a very long time, he might have some insights for you also. Like his niche is completely different than mine, Mm-hmm. but like basically all he talks about right now is streaming. Like Mm. according to him, GTA 6 आने वाला है 2026 में. हाँ. By the time GTA 6 comes, like I don't know about me, but for people who are like making videos on YouTube and stuff, they हाँ. should start looking into streaming because streaming is going to be very big. Okay, because of the entire GTA 6 market. Yeah, exactly. And there are other ways to capitalize on the GTA 6 Mm-hmm. hype as well. I think so. Okay, so what do you feel are some of the content buckets जो अगर हम मैं बना लूंगा, this is like you said, right, GTA 6 is one of the thing that's coming to in the future, next year. तो ऐसा और क्या क्या चीजें जो चलती है मार्केट में कि मैं इसके ऊपर बोलूंगा तो वो चलेगी ही चलेगी. Okay. Definitely finance content. हाँ. Okay. Okay. And political content as well, but I would never touch it, to be honest. Definitely anything that can be controversial. Like I believe in controversy a lot because like Okay. suppose you take the example of Samir Raina, like why did he become so famous, right? Because हम्म. what comedians to बहुत है, but why did Samir Raina became so famous? हम्म. Because he says a lot of controversial stuff, right? He reads Definitely भाई. people into watching his content. हाँ. There are some other examples as well. You can even take the example of Tanmay Bhatt, what they did with AIP back in the day. Yeah, हाँ. They, Too they, much. they had a show where they invited Karan Johar हाँ, and हाँ, हाँ. Ranveer Singh, and like it was a big controversy. He had another controversy where he made a video with like he was mimicking Amitabh Bachchan. हम्म. Then like he got fucked up very bad. Like I'm not saying he you should do something like that, but हाँ. I believe in like trying to fly as close to the sun as possible without getting burned. Without So, getting. so that's kind of like a mindset that I have. Crazy, right? Crazy. I think that's a very nice thing. Even when we do a lot of social media research, then we always try to always like ऐसे बस थोड़ा सा टच करके निकल जाओ वहां से. And I feel like it Uh, always works out really well. because to be So, honest, hmm, social media is saturated right now, and you will yeah, have to differentiate yourself in some way or another. For me, that is a good way, in my opinion. crazy, crazy. Okay, can you talk us about some of the hooks that you use? Because why your hooks work really, really well, not just in terms of the script, but also the visual also. You are sometimes putting sunglasses, sometimes you're putting Mhm. a hat. So, how do you come up with this kind of hooks? Okay, so I was just scrolling reels and a guy popped up. He was cutting vegetables. अच्छा. Okay, फ्रूट्स वो हाँ. फ्रूट्स कट करके बोल रहा था कुछ बोल रहा था मैं तो उसका मतलब फ्रूट कटिंग देख रहा था and I was also listening to him then at the हाँ. end he said कि I am cutting fruits क्योंकि आजकल लोगों का like ability to concentrate is very bad. Very less, very less. Attention span is You might have seen become this. Arpit Wala's videos as well, right? वो हाँ. ऊपर बात कर रहे हैं नीचे Subway सब. surfer. हाँ. So I thought like that's how I figured out कि वीडियो में just the information is not enough. You will have to have some visual hook as well. हम्म. So I try to incorporate a visual hook. Suppose what I try to do is like fix my cap or wear sunglasses. और जब मैं दिल्ली में था मैं तो like I didn't have my car right तो मैंने सोचा मैं अब हाँ. क्या करूँ. What kind of visual hook should I have? मैं तो रूम में बैठ के वीडियो बना सकता था. Then I हाँ. thought okay मैं बाहर गली में वॉक करते हुए वीडियो बनाऊंगा because then when I'm walking people are also seeing that I'm walking and the background is changing so Yes, I yes. thought that would also have an effect like there should be some movement in the video all the time. Okay, got it, got it. I think हाँ जो लोग बैठ के बोलते हैं वो editing से that they try to cover this up. But if you don't want कि editing पे rely होना है, then you Mm-hmm. obviously do record में ही उसको ठीक कर दो है ना. Yeah. Okay, tell me how important are scripts and ideation, and give us some tips on how we can write our killer scripts. Basically, जो चल जाए भाई मतलब ऐसे click हो जाए. Any Okay, format that so you follow. okay, so the first thing is definitely the hook and you can like
I just came up with it in my like own head. Actually, hooks are like old right now. Like hooks तो सभी जानते हैं. The हाँ. next big thing is rage baiting. Okay, हाँ. you have to grab the attention of the people in a very toxic way. Maybe like you have to say something controversial at the beginning. Hmm. So like, and also I have noticed that negative hooks work better than positive hooks. So I Hmm. always try to like have some sort of negative element in the hook itself. Like I know it sounds very toxic, but it works. Yes. Okay. हाँ. So and the next thing I try to do is like information तो मैं share करूँगा ही, like whatever I talk about. I also try to add like a personal element to it. I try to add examples a lot, Hmm. especially if something has happened to me. It doesn't necessarily have to be with me. अगर मेरे दोस्त के साथ भी कुछ हुआ है, I will try to हाँ. mention that in the video. Okay. So like personal examples. और Hmm. कभी-कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी-कभी बात करते-करते I talk a lot, I keep yapping, and then people might lose focus on what the video was actually about. Hmm. So I use this line very often. So the point of the Okay. video is. So I try to keep like a conclusion of the video, and then हाँ. if there is a CTA at the end, then I will add the CTA. So number one is rage bait. Second, the information. I will try to keep some personal information or example in it. Then the conclusion, and then the CTA. Most people do is they have a hook, then information, then Hmm. that's it. Hmm. I try to came up with an evolved way of script writing. ओके. ओके. सो एनीवन हु इज स्ट्रगलिंग विद कंटेंट क्रिएशन, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि उनको लगता है कि माय वीडियोस आर नॉट गुड व्हेन दे स्टार्ट आउट, कि भाई मेरा Hmm. तो इंस्पिरेशन यहाँ पे है बट माय वीडियोस आर Hmm. वेरी हियर एंड आई एम सो डीमोटिवेटेड कि भाई मैंने तो सोचा बहुत अच्छा वीडियो बनाता हूँ मैं, लेकिन फिर जब देखा इट्स नॉट Hmm. नाइस एट ऑल. सो हाउ डू यू कम अप विद दैट फियर कि भाई मेरा वीडियो खराब है? Hello, यस. Uh, गाइस. Abhinav. Hello, हेलो अभिनव. यस. I'm audible. यस. यस, यू आर ऑडिबल. एक्चुअली ना भाई मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो क्लियर है कि मेरी वीडियो अच्छी है, क्योंकि ओके, मेरे दैट्स अ को न्यू प्रॉब्लम. हाँ. हाँ, मैं आपको बताऊं, आप लोग शायद बाहर से हो, मैं भोपाल से हूँ. हम्म. तो मुझे तो क्लियर है भाई, मैं मेरी वीडियो अच्छी है. जिनके लिए मैं काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ एज एन वीडियो एडिटर एंड वीडियोग्राफर. क्या? मैं जिन ब्रांड्स के लिए बना रहा हूँ वो भोपाल में भी काफी बढ़िया है. हम्म. बट द प्रॉब्लम इज जब मैं कंटेंट डालता हूँ तो वो चलता नहीं है, पता नहीं क्यों, भोपाल में या बाहर भी. और हम्म. जिन लोगों का कंटेंट चल रहा है उनके वो एडिटर भी नहीं है, सिर्फ वो अपना फोन निकालते हैं, कुछ बकबक बकबक करेंगे, और वो कंटेंट चल रहा है भोपाल में. ओके, समझ दैट्स द गया. प्रॉब्लम. ठीक है. दैट विल हम ना आपकी वीडियो में एक रिव्यू करेंगे. ओके, We'll try to see your Instagram when we start the session. और So quickly, let's just get it out for most of the creators who are starting, because हमारे सेशन में there are a lot of creators who want to get started, but वो यस. fear उनके माइंड में रहता है कि भाई मेरा वीडियो अच्छा नहीं है. हाँ Obviously हाँ. Abhinav has been in the industry, he has been doing a lot of video work, तो अ, उनका वीडियो तो obviously अच्छा है. But there's a lot of people other जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली अब नहीं उसको नहीं, उनका पर्सपेक्टिव ऐसे बन जाता है ना. कुछ टाइम पहले साथ मेरे साथ भी ऐसे ही था, तो मुझे लगता था कि शायद मेरा वीडियो अच्छा नहीं है. हम्म. वीडियो अच्छा होना इज नॉट कि आपका वीडियो इंस्टाग्राम पे नहीं चल रहा है. नहीं नहीं, आई ये कंप्लीटली ये एग्री. तो हाँ, ये मैटर नहीं करता है कि इंस्टा पे नहीं चल रहा है. आप ना कुछ मत करो, अपने क्लाइंट से पूछ लो, उनसे उनका, अगर वो आपके साथ बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं तो आपका वीडियो अच्छा है. वो इज दैट कि किसी को क्लिक नहीं हो रहा है या वो रिलेटेबल नहीं है. ये चीजें हैं, बस दो चीजें आती हैं. अगर आपका वीडियो नहीं चल रहा है तो वो रिलेटेबल नहीं है, बस, और ठीक है. कोई बात नहीं है. Yes, I think you are right, Abhinav. So we'll also understand from Kishore uh, exactly what he wants, what he thinks about the entire topic. So I would love to know your opinion कि भाई हम कैसे उसको overcome कर सकते हैं for all the new creators. Yes. the fear of कि मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, क्या करूँ? See, like when I create a new video ना, I get demotivated कि यार ये अच्छा नहीं है. अच्छा अच्छा Just अच्छा starting अच्छा, में. ओके तो ओके भाई ओके. मेरा वीडियो अच्छा नहीं है, not in terms of views, right? The quality is not nice. I don't have camera. मेरे पास कैमरा जगह तो I'll do this. मेरे पास माइक नहीं है. या फिर मेरे दोस्त इस वीडियो को देखेंगे तो मजाक उड़ाते हैं कि भाई तेरी वीडियो जैसी नहीं है. तो how do you overcome this fear? और जब स्टार्ट करा, obviously people might have judged you, definitely your friends and family. How do you overcome that fear of being judged and अपना एक imposter syndrome रहता है. How do you I overcome get that? it, I get it, I get it. मैंने जब स्टार्ट किया था, I had two options. I could create a new
Instagram profile to post my videos, or I could use my personal Instagram account. पहले मैंने सोचा था कि मैं नया क्रिएट करूंगा और ये वाला प्राइवेट रखूंगा, बट देन आई थॉट कि लाइक ओ फक व्हाई एम आई डूइंग दिस, इज इट बिकॉज आई एम इनसिक्योर कि लोग मुझे जज करेंगे? सो आई ऑलवेज ट्राई टू टेक द हार्ड रूट whenever I do something. The hard route for me was to get judged by my family, my friends, and my other people, and I wanted to get rid of that as quickly as possible. क्योंकि eventually अगर if I had to grow big, like जो नया account मैंने खोला है, people will eventually discover that as well. So I want to just get rid of that as soon as possible. मैंने सोचा fuck it, I'll start it from my personal Instagram account. I'll get judged and I'll get over it as soon as possible. And also like if suppose मेरे वीडियोस में व्यूज नहीं आते स्टार्टिंग में, देन आई वुड एक्सपेरिमेंट अ लॉट. मैंने आज ही एक वीडियो डाला है अबाउट 10 टिप्स ऑन हाउ टू. यस यस आई सॉ द वीडियो. एंड देयर आई said one thing कि like think of a reels as lottery tickets. The more lottery tickets you, the higher the chances of you going viral, right? And also it's important कि जितने भी तुम वीडियोस डाल रहे हो, like they should be different. Like suppose तुमने एक वीडियो डाला उसमें 1000 व्यूज आए, दूसरा वीडियो डाला उसमें 2000 व्यूज आए, तो तुमने सेम काइंड ऑफ वीडियो ही बार बार डाला तो वैसे काइंड ऑफ व्यूज ही आएंगे. यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्मेट्स. You have to experiment a lot. That's the thing. मुझे लगता है एक्सपेरिमेंटेशन इज द की, बिकॉज इन माय जर्नी आल्सो लाइक मैंने बहुत सारे पेजेस भी बनाए थे, ये पेजेस वो पेजेस, एंड नथिंग वर्कड आउट रियली वेल, बट एक क्लिक हो जाता है एंड देन द बॉल स्टार्ट्स. मेरे केस में भी मैंने मोटिवेशनल पेज बनाया था, मैंने कुछ टिकटॉक इंस्पायर्ड पेज बनाया था. I tried out a lot of things and then that crypto theme page worked out. Okay, guys, we have a lot of people joining us in the Instagram live also. So we have almost 33 people in the Instagram live. If you might not know Kishore, I'm live on my Instagram what do you call profile also. Okay, and Google Meet to chali raha hai. So there's lot of viewers. Okay, we have one question, okay? Any new tips for beginner creators? But the problem is that tips is very generic. So I want to understand how important is editing, how important visual quality is, because आपने अपने reel में बताया था, which I won't be sharing, but I would want you to share. How good is production quality? क्या कैमरा होना जरूरी है? क्या एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए? Just let me know. Not at all. Like video quality अभी ऐसा हो रहा है कि everyone's trying to make very good quality content, and I feel like it's getting saturated. And I always try to, मैंने आज वीडियो में भी बोला कि I always try to remain in the minority of whatever I'm trying to do. So everyone is making high quality content, and especially मुझे ऐसे टाइप के वीडियोस दिख रहे हैं जैसे वरुण माया kind of content, right? नीचे you have your head and ऊपर all the information is out there. I feel like everyone is doing it. Instead of doing that, like make face to face content, just ऐसे कैमरा ऐसे पकड़ के तुम बात करो. Like not a lot of people are doing it, but the crazy thing is that a lot of people in the US are actually doing it, and that's where I got the inspiration for this. Got it. Yeah, in short, your video quality doesn't matter. It doesn't really matter at all. Especially now, because everyone else is focusing on that. I think yes, standing out from the crowd, right? जैसे you talked about in the reel कि भाई सब अगर edit कर रहे हैं बहुत अच्छा तो तू नहीं करेगा edit, तो तेरी वीडियो stand out करेगी, and obviously people want to watch it. अगर सभी edit नहीं कर रहे होंगे तो मैं edit करूंगा. I think few time back सारे लोग मिस्टर भी जैसे वीडियो बनाने लग रहे थे, है ना, fast cuts and fast pace edits, and then suddenly people started doing storytelling बैठ के बस. Exactly. और ये किसी भी like in any aspect of life this has been going on. For example, एक टाइम पे skinny jeans, सभी skinny jeans पहन रहे थे, फिर अचानक से the trend to wear baggy clothes came in. Right now everyone is wearing baggy clothes. Now like अभी उससे stand out करने के लिए कोई और कुछ और trend लेके आ जाएगा, वो फिर trending हो जाएगा. The person who starts it, I think they have an edge over the others who start late. Crazy. I think you shared some really insightful tips. सबसे पहले तो production quality is not important at all whenever you are starting right now, at least, because everyone is focusing on high level edits, high level camera production. When you actually put out the value in your content by thinking about hooks and all, it actually works out really well in favor of you. Number 2 is basically कि भाई when you start out, don't think about a lot कि judge करेंगे लोग. Judge तो करना ही है.
है ना? Exactly. अभी नहीं करेंगे तो 10,000 फॉलोअर तो जज करेंगे. So Yeah. just get the fear of judgment out of the way, throw it out the window, and you can obviously start with your own personal page जहाँ पे आपके दोस्त है, फैमिली है, क्योंकि बाद में तो जज करना ही है. So अभी ही कर लो. Yeah, Is exactly. what you mean, right? So crazy insight भाई, मतलब बहुत सही है. Another thing I have noticed Yeah. is that people fear getting hated a lot. कि लोग हाँ. hate comments डालेंगे, how will I deal with that? But Yes. I think the other way around. I call it hate farming. I want to get as much hate as possible because, to be honest, like negative things like these drive your success very fast. मैंने आज ही चेक किया था. Like actually someone else sent it to me a long time ago. मेरा एक वीडियो रेडिट में है in अच्छा. a thread called नॉर्थ ईस्ट और समथिंग, और हाँ. उन लोगों ने मेरा वीडियो डाला हुआ है ऊपर, और नीचे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये बंदा क्या बोल रहा है. कुछ लोग मुझे डिस कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं. लाइक कंट्रोवर्सी इज गुड फॉर It's good. It's good. I think वही है भाई, मतलब any type of PR is good PR. या चाहे वो आपने कुछ गलत एग्जैक्टली. बोला हो, सही बोला हो, it डोंट बी always. स्कैर्ड ऑफ हेट मैन, टेक Yes. एडवांटेज ऑफ इट. Yes, yes, yes. Okay, I think we can get started with the review part, है ना Kishore? हाँ हाँ. After the review, we'll obviously take some feedback and questions from all of the people who are here, and also I have some people joining on my Instagram. So वहाँ से भी we can take some questions. So okay, let's start. I think you have the link. या So guys, so this how this will go is basically Kishore will has link of some दो लोगों ने शायद वीडियो बनाया. बाकी लोग I don't know what you guys are doing, guys. You guys need to level up. और अगर आप लोगों ने वीडियो बनाया, maybe you have not submitted the link, you can always submit the video का link in the chat box यहाँ पे, and we'll obviously can go through. We'll go through around 3 to 5 videos to understand what Kishore thinks and what can be improved in your videos. तो भाई जिसने बनाया है, you can just paste the link to your videos in the inbox या फिर जो मैसेज वाला टैब है. So just पेस्ट कर दो अगर आप लोगों ने बनाया हुआ है. And Kishore, I think you already have the link, so we can get started. You can share the I'll screen just also. go ahead and share my screen. Yeah. Sure. Done. Okay. I think you already have the link, so we can get started. Okay. स्नेहिल ने भी भेजा है. स्नेहिल. Okay. Okay. This is the first video. Okay. Is the audio? No, it's not audible. So आप एक काम कर सकते हो. Mm-hmm. ऊपर जो वो है ना, I think it's muted. Oh, okay. Also, you can also do one thing. ये जो लिंक है ना, आप इनबॉक्स में भी पोस्ट कर दो किशोर एक बार, so that if people want to see, they can also check it out. Okay. Okay. Done. Got it. ठीक है. Okay, wait, let me reload the video and start it from the beginning. It's posted on Instagram. Yes. It's posted on Instagram. Okay, Kishore, I think आपका ऑडियो नहीं आ रहा. I'll do one thing. I'll share my screen. I'll play the video, and then obviously you Okay. can. Yeah, we can do that as well. Yeah. Okay, wait. Let's go. मेरा UI same ही है, चलो बढ़िया. I'll reload it. I think it's visible, right? Yeah. With the vision to become India. आवाज आ रही है? आ रही है. Okay, let's reload and then. Release हुई Nano with the vision to become India के घर का कार, but somehow came with the baggage of being the cheapest car too. Advertised at just 1 lakh, भयंकर PR and दुनिया भर में headline, but on road price came as high as 2.5 to 2.9 lakhs. फिर the Indian logic clicked in. यार 1 लाख और डाल के वैगनआर ही ले लेते हैं. थोड़ी बड़ी, थोड़ी पावरफुल and not seen as the cheapest car. ना ज्यादा हाइप ना ड्रामा, simply a family loved car. It was slow, it was consistent, it was promising. No bhayankar PR, no big claims, just working quietly and solidly. WagonR felt normal. Nano in the same place felt compromised. Plus,
एक एक्सपेरिमेंटल गाड़ी जैसा डाउट एंड वैगनआर केप्ट इम्प्रूविंग. नए वेरिएंट्स, सीएनजी ऑप्शंस, फीचर्स, सेफ्टी एक्सेट्रा हर 2-3 साल में अपग्रेड कर देते हैं. नैनो लिव्ड अंडर द लिमिटेशंस ऑफ बीइंग द चीपेस्ट कार. ऊपर से अर्ली फायर इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स ने ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया. नैनो का सपना तो सही था पर उसका रिजल्ट वैगनआर ने साइलेंटली एग्जीक्यूट कर दिया. 2008 में रिलीज हुई नैनो विद द Got विजन. it. Okay. I think Hmm. you were able to see the video. I think everyone was able to see the video. Yeah. Yes. Okay. I So think Mhm. let's start with the review. So like the moment I started watching the video, like I had like मुझे पता नहीं लग रहा था कि what this video is about, right? क्योंकि Okay. like there is no hook, there is no context कि what the video is going to be about. Like when I watch an interesting video, usually video के starting में ही they are like कि this happened, but why, or like they provide some kind of context. There is no hook in this video basically. Right. Like direct, she's starting with information. This video is basically about why Nano didn't work out, right? Yeah. Then Wagoner took off. So maybe she could start with a hook like Nano didn't work out in India, but not because of the reasons why you thought so. Something like that, right? You have to some kind of curiosity, or maybe you can use some sort of negative hook as well. अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है. But like that's the problem. Another thing is मैंने कुछ देर पहले अभी बताया था ना, that Bharvan Maya format, like Yes. Same format. I think it's been done here also. I've seen this format so many times by now that I have gotten bored of it, to be honest. Exactly. That's the problem. Like, what do you think, Sanjay? Like, what do you think? I feel it lacks a lot of different things. सबसे पहले तो as you said, right, hook उसमें नहीं है बिल्कुल भी. It's not nice at all. Also, I would want the presenter to be a little more confident. Obviously, they are starting their entire journey in content abhi, but I would want them to be थोड़ा सा well prepared in terms of yeah. So what I do is whenever I speak in front of camera, I always do a vocal exercise. I shout थोड़ा सा like oh ऐसे करके. So it just opens up my vocal cord in my chest, and then my voice also sounds a lot more better. Jenny X, obviously you can mute yourself for out right now. तो उससे क्या होता है, मेरी आवाज माइक में बहुत अच्छी आती है ना. या तो आप बोलने की कुछ भी बोल लो, प्रैक्टिस कर लो, एंड देन इट ऑब्वियसली हेल्प्स यू टू ओपन अप योर वॉइस. इट साउंड्स कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा. सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आई वुड वांट यू टू डू अ बिट ऑफ प्रैक्टिस before actually starting the shoot. I think even I could use something like that. So that is there. And also in terms of I try to do is like I talk very slowly in real life, to be honest. Like, I am not a very fast thinker. Like जैसे Elon Musk बोलता है, बहुत सोचता है, फिर बोलता है, फिर सोचता है, फिर बोलता है. Even I am that kind of a person. Okay. Videos में I have to fake it. Yes, absolutely. You have to fake it. So my technique is to speak fast. Okay, I try to speak very fast, and what that does is like number one, it makes you look confident, and number two, because logo ka attention span is decreasing, the faster you speak, then people have the tendency to completely watch the video. Definitely. I think speaking faster is very important. Also, अगर आप fast नहीं बोल सकते, what you can do is you can break your scripts into smaller segments, and which I think you also do, right? Yeah, exactly. थोड़ा देखो, थोड़ा पढ़ो. Like people have a very big misconception कि मैं अपना कैमरा खोलता हूँ and then I talk starting to end. No, not at all. मैं पता है मैं क्या करता हूँ, अपना फोन खोलता हूँ, डैशबोर्ड में रखता हूँ, and I keep my iPad on my left side. I turn on the record button, फिर मैं first line बोलता हूँ, then I look at the iPad again, then I read the second line. Then I take a look at the iPad again, read the third line, fourth line, fifth line. Sometimes I say 2 lines at a time, sometimes 1 line at a time. If you look at my raw video, like you will puke, to be honest. इतना गंदा होता है. Then I just cut all of those silences in my editing, and I try to like make it flow in one like एक बार में it should end, right? It should go exactly nicely. Yeah, is what you are trying to say. I understand, bhai. मतलब even for 1 minute video, I record for like 15-20 minutes. It's my time. What is your time, Kishore? Not 15 minutes. Like usually it takes like 6-7 minutes
for a 1 minute video. Crazy. I think you are so much better than me. क्योंकि No, मेरे को no, मैं no, बहुत no. बार बोलता हूँ मैं कि मुझे I want the emotion to be in the right way, right? The way you Hmm. smile. If you are smiling, the voice sounds very different. अगर मैं स्माइलिंग करूँ, मैं ऐसे बैठूंगा, चेस्ट को ऐसा कर दूंगा, it will not sound nice. Obviously, that's there. तो Yeah. वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और भाई कैमरा खरीदो नहीं खरीदो, मोबाइल खरीदो नहीं खरीदो, गेट अ माइक भाई. या तो माइक मैं माइक भी यूज नहीं करता, मैं तो आईफोन का ही माइक यूज करता हूँ. So Kishore doesn't even use mic. Obviously, वो कार में रिकॉर्ड करता है, तो I think noise Yeah, the cancellation. insulation is हाँ. good. हाँ. So maybe try finding a corner जहाँ पे ज्यादा noise नहीं है. और किशोर जैसे गाड़ी में चले जाओ भाई, और वहां रख के you can just record your videos and then you can get crazy views. बट लाइक जो मैं बाहर दिल्ली में जैसे मैं दिल्ली वाले वीडियोस में Yes. आई जस्ट नॉर्मली बाहर ही आई यूज जस्ट माय फोन ओनली. ठीक है, मतलब इट्स फाइन. मैं वैसे प्रीमियर प्रो में थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ मैं अपने ऑडियो को. देयर इज वन टैब कॉल्ड एसेंशियल साउंड. Yeah. वहाँ पे पॉडकास्ट वॉइस यू कैन एनेबल इट एंड दैट मेक्स इट अ लिटिल बिट बेटर. अदर देन दैट आई डोंट डू एनीथिंग. Crazy. Okay, Kishore, can you send me the link to the next video? Yeah. We'll review that also. हाय, हेलो. Yes, Abhinav. भाई मैंने लिंक भेजी, आप क्विकली रिव्यू कर सकते हो क्या? यस, आपका रिव्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले ना एक लाइन पे है, उसका रिव्यू करके एंड देन विल, जैसे चैट में आपको देख रहे हो ना, स्नेहिल है, अनिकेत है, एंड देन विल डू सीरियल वाइज. सबका रिव्यू होगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा ब्रो. लेट्स जस्ट स्टिक फॉर अ व्हाइल, है ना. तब तक गाइस लेट्स राइट किशोर को मोटिवेट करते हैं थोड़ा और. लेट्स राइट KOP गाइस इन द चैट. जिसको भी ये लाइव में मजा आ रहा है, दे आर गेटिंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम किशोर. मेरे को लग रहा है कि ये वैल्यू ड्रिवन हो रहा है बहुत सारी चीजें. लेट्स राइट KOP इन द चैट गाइस. इंस्टाग्राम people also, we have almost 30 people joining in Instagram also. तो भाई आप लोग भी KOP लिख दो and बहुत मजा आएगा भाई. KOP crazy. Okay, आप मेरे को लिंक भेज दो. Okay, we've got a link. I'll just open it. Okay, we have a storytelling sort of format. इस format के बारे में I will also want to discuss to you. We have KOP, OP, Kishore, Rabha. अरे crazy भाई. Let's do it. Okay, so this is a reel. I think this format is a caption वाला format. Let's see what happens. Okay, what Papa said MBA में सिर्फ पढ़ाई करनी है. Okay, I think this is one of my I think alumni of Let's School, Harsh, and bhai, this I would like to know Kishore ka opinion on this kind of format where you write something, a copy, and then that is the kind of video. Montage videos is what I call them. What is your opinion? Then how do you like the video? Yes. I like the format, but I think for a format like this to work, the shock factor has to be very big. Like for example, जैसे कि he showed कि he is playing with his friends, enjoying and stuff inside his hostel, but like that's kind of generic to be honest. Like क्योंकि सभी करते हैं वो ना, है कि नहीं? Like even in my college life, like मैं भी तो वो करता था और बंदों के साथ. Like there is no shock. Suppose कि वो ऐसे 10 बंदियों के साथ walk कर रहा है कैंपस के अंदर, it would be like a crazy shock. उस पे मिलन भी रह जाते हैं. हाँ. But this is like okay, ठीक है. Shock factor has to be crazy for this to work. So basically, so all these videos ना मैं इनको बोलता हूँ A versus B, कि कुछ तो होना था. People are saying something and then I do something. A versus B. So you expect X and Y happens. और उसका बीच का जो डेल्टा है, which is a difference, कि भाई बहुत क्रेजी हो गया, उसी में आई थिंक इट रियली वर्क्स आउट वेल, है ना. ऑल्सो अनदर पीपल, लोगों को लगता है कि दिस वीडियोस आर वेरी रिलेटेबल, इज व्हाट आई फील. बट प्रॉब्लम है कि रिलेटेबल के साथ रिलेटेबल तो सब रिलेटेबल हो जाएंगे. सो ऑब्वियसली यू नीड टू स्टैंड आउट इन दैट वे. सो हर्ष, मे बी यू कैन ट्राई कि भाई जो अपना बिफोर एंड आफ्टर है उसमें चेंजेस बहुत ज्यादा लाओ, थोड़ा सा
if you can make it more drastic. Come on Superman, See You Stupid Line is a very nice trendy song. वो बहुत उस पे हाँ kudos है कि भाई बहुत अच्छा गाना पक रहा है, trendy. I would say कि बिफोर आफ्टर कुछ में बहुत तगड़ा कर दो, बिफोर में आप बहुत तगड़ा कर दो हाँ कुछ ऐसा फॉर तो एग्जाम्पल कि सपोज पहले तुम बहुत पतले थे, फिर नेक्स्ट में एकदम बल्क एकदम क्रेजी, हाँ बल्क वैसा अप हो गया है ना, तो होना दैट वुड चाहिए। हैव बीन क्रेजी, क्रेजी. Okay, next we have Snehil Sharma. We'll review his video. Okay, proof that nobody is normal. Okay, I'll share my screen. We have the video here. Okay, I'll reload it once and then. Okay, ready? Sure. Yeah. Okay, I think Kishore is watching this video for the first time. Let's If Yeah. there was no law or courts to punish you, would you still remain moral, aka a good man? Most of you will confidently say yes, but I don't think that's true. Because look at this picture closely. This is a private island off the coast of the United States. It belonged to billionaire Jeffrey Epstein, who didn't use it as a vacation spot, but to run the world's biggest sex trafficking scandal. Underage girls were trafficked for men who had something in common: power. Just look at the names who have been alleged: UK's Prince Andrew, former US President Bill Clinton, singer Michael Jackson, close allies of Donald Trump and Bill Gates. And I know none of these have been convicted yet, but I guess we all know how powerful networks work. These people might never face any sort of punishment or conviction. And this brings us to one of the principles of moral philosophy. If consequences were out of the picture, most people would abandon morality. All these powerful people knew that they would never be exposed because, well, they are practically the ones running the world. And I will leave you with an uncomfortable question. Do you really think a country like India, with power gaps this extreme, does not have its own Epstein files? If there was no crazy. Okay. It's a good video overall, but like he can work on the visual hook, to be honest. And ऐसे type के content के लिए ना, there's this girl called Ria Speaks. She Yes, makes हाँ. really good content. Like her visual hook was really good. Like kabhi she's walking on a table, then she will get off the bed, and like that kind of vibe. Maybe he could try it out as well. Yes, I think Snehil ka content I've already seen Yeah, it before wasn't also, bad. right? Snehil is with us. Snehil. I think I saw the why rich guys are humble wala content. I think that really clicked with me. I think he makes a lot of philosophical thought wala question, which is crazy. I think script wise बहुत crazy है. Just as Kishore said, थोड़ा visual hook पे if you work, I think the I video have a will. question actually, if you are Yes, taking the question. yes, definitely, Snehil. Yeah, and like it's to both of you. Should I create content about other people or should I create content about my thoughts? And I think there is a difference for like if I create content for on other people, like probably some trending news and I present that and my views on that. So people like I will get views but not followers maybe. And but if I create content around my thoughts, it will like initially it will be hard to get engagement, but once it clicks, people like I will get more followers. Like, what do you think about it? Okay, I would love Kishore to answer that. Yes. Yeah, like create content about other people and give your own opinion on those other people. That's what I would say. Best of both worlds. क्योंकि Got see it. the problem I have noticed कि बहुत सारे creators आए हैं, बहुत सारे creators गए हैं, and most of those people just provided information, right? Like you are like a newspaper or like a magazine page. So the problem with that is someone else will come out who will make better content, who will provide better information than you. Maybe their video quality will be better, maybe the way they speak will be better, maybe like some kind of aspect will be better. But if you give your opinion, then people will watch you not like definitely your information will also have to be good. But if you provide your opinion, then people will watch you for you as well, not just the information that you provide. So you have to build a personal brand, and to build a personal brand, you will have to give your own opinion. Definitely, I completely agree with what Kishore said कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ो और उस पे अपना ओपिनियन दे दो. जैसे एप्स्टीन आइलैंड पे ऑब्वियसली यू हैड द ओपिनियन कि इंडिया में क्या एप्स्टीन आइलैंड नहीं है क्या, ऐसा सॉर्ट ऑफ कुछ है नहीं है. दैट वाज अ रियली नाइस ओपिनियन व्हिच डेफिनेटली हिट मी कि भाई सही तो बोल रहा है भाई, मतलब होगा शायद से क्या पता. So I think definitely that should be think two things definitely I think you can take away from this conversation is basically
कि भाई सबसे पहले तो विजुअल हुक बहुत तगड़ा कर लो आप, सारी कंटेंट बहुत प्रॉपर है, जस्ट खड़े होके भाग के चल के कुछ कर लो, बहुत अच्छा वो आ जाएगा। बिकॉज फर्स्ट के 5 seconds आर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली। वो अगर हुक हो गया, information, you really have a very good script. You worked with Vedant Rasti and the few folks. I've seen your Instagram. I understand where you're coming from. So scripts are crazy. Visual hook पे बस थोड़ा काम करना है and then you're done. Music wise is also very nice. I really like the music. That's very trendy and exposing वाला music. So Right. great job on that. So yeah. Thanks a lot, both of you. Thanks a lot. Yes. You're most welcome, Neil. Okay. Next we have Aniket Kanwar. Let's review his video. Okay. Let me. I think it's a some sort of video. I'll show it to you guys right now in 3, 2, 1. Let's go. Okay, I think it's looped. But yeah, I've seen the video. You have seen the video. What is your opinion on this, Kishore? Okay, so like whenever I come across like niches that I have no idea about, my recommendation to people is कि तुम्हारा जो niche है उससे related कोई US creator ढूंढो, like find a bunch of US creators who are going viral with a similar niche and just copy them. That's it. Because chances are कि something like that has not been done in India yet. So you'll have an edge over your competitors. हमको ये पूछना था Yes. कि अगर हम इस टाइप पे लेके उधर कैसा टाइप का कंटेंट बना सकते हैं, क्या सॉरी, किस टाइप का कंटेंट हम बना सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेटिव हो गया, हम कैसे बनाएं, वैसा टाइप का कंटेंट सब बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं, लाइक डोंट ओवर थिंक इट, जस्ट कुछ ना कुछ डालो, या तुम्हारे घर के बाहर गू पड़ा हुआ है उसके बारे में अपना ओपिनियन डाल दो, कुछ भी डाल दो स्टार्टिंग में, यू विल फिगर इट आउट, जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग एंड यू विल फिगर इट आउट, दैट्स माय सजेशन। Okay, Aniket Kanwar, I think did you make this video Blender या फिर कुछ पे, या फिर ये कहीं से आप लोग हाँ, डाले ये थे? ब्लेंडर पे बनाया है, ब्लेंडर पे बनाया है। अरे भाई अगर हम crazy. लोग I आईडी think चेक करेंगे तो प्रॉपर हम प्रोडक्ट वैसे बनाते हैं। okay. So Aniket, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. There's a guy, I don't remember his name, but he makes games, ठीक है? वो या VFX वगैरह करता है. And then what he does is basically वो बताता है कि भाई मैं आज ये बना रहा हूँ और before दिखा के after दिखाता है. तो Porsche के ऊपर you have made a video. I think that was Porsche 911. I think मैं mistaken है. तो भाई तुम बिफोर दिखाओ कि भाई इट टुक मी 105 hours टू मेक दिस वीडियो, दूर से क्या फोन रख के, और नीचे वो स्नैपचैट वाला चलता है ना, उसके बाद तुम आफ्टर में ये डाल दोगे ट्रेंडी सॉन्ग के साथ, भाई ये फटेगा भाई, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज ये वीडियो देख रहा हूँ ना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये ब्लेंडर पे मेहनत से बनाया है, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट लोगों को कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है कि भाई मैंने इतना मेहनत लगा के ब्लेंडर पे बनाया है, और जब लोग देखेंगे तो गांड फट जाएगी भाई। और भाई मेरा एक स्टूडेंट है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ही मेड समथिंग सिमिलर टू दैट, ही डज इलस्ट्रेशंस एंड आर्ट्स। भाई एक वीडियो 1.4 million एंड ही गॉट सो मच ऑफ क्लाइंट्स कि हैंडल करना मुश्किल हो गया। So not just in terms of virality, but also in terms of work and everything, it can just change your life, भाई, change your life। मैं लिटरली बताऊँ तो अनिकेत, you can do this definitely। लैपटॉप आपने पे जो काम आइडिया दिया ना वो बहुत अच्छा लगा, वैसे हम बनाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, बहुत क्रेजी हो जाएगा। ऑल्सो चूज नाइस सॉन्ग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉन्ग बहुत अच्छा होना चाहिए ना, नहीं तो इट्स डिफिकल्ट फॉर इट टू वर्क आउट, है ना? फॉन्क बहुत चलता है ना, फॉन्क ऑडियो। हाँ फॉन्क ऑडियो। तो अगर तुम लोग को नहीं पता, आई थिंक किशोर कैन टॉक अबाउट इट, कि ऑल ऑफ दिस जो एंड्रयू टेड वाले सॉन्ग्स होते हैं, दिस आर कॉल्ड फॉन्क ऑडियो। अगर आप स्पॉटिफाई पे जाओगे तो इफ यू टाइप फॉन्क यू विल गेट ऑल ऑफ दिस सिग्मा टाइप सॉन्ग्स, और उस पे एडिट बनाओगे तो कुछ भी चलेगा भाई। मैं ऐसे पॉडकास्ट में बैठ के बोलूंगा, यू नो लाइफ में हमेशा मुश्किल चीजें करनी चाहिए, एंड देन कुछ फॉन्क ऑडियो लगा दोगे, इट विल ऑलवेज वर्क आउट। Then he'll be walking to his car, smoking a cigar. Exactly भाई। तो that is something we can do, और वो बहुत चल जाएगा, बहुत क्रेजी चलेगा। So funk audio is on Spotify. You'll mostly find all the trending Sigma songs, which will always go with all of this kind of transitions before after videos. उसको यूज करो, फट जाएगा वीडियो। Okay, we'll take few other things and then we'll wrap this up. We'll take okay, Harsh is saying no.
Okay, we have Hmm. uh Abhinav का I think video with us. We'll review that. Abhinav is the one जिन्होंने कहा था कि उनका कंटेंट अच्छा तो है बट उनके व्यूज शायद से इतने पुल ऑफ नहीं हो रहे. हेलो। यस यस रितम. हाँ तो मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म टाइप का बनाया है, ठीक है, एंड मैं ठीक है. जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ओके. आप क्या चेक कर सकते हैं आप दोनों में? किशोर दा को बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा संजय दा को। वी कैन चेक इट. आप थोड़ा नीचे लाइन पे हो तो हम आगे वाले हाँ, को मैं खत्म थोड़ा करते. मतलब मैं बाहर था तो लेट आया लाइव पे कोई देखा नहीं, था मैंने, बट लेट आया। कोई आई दिक्कत एम नहीं, सॉरी कोई अबाउट दिक्कत नहीं. दैट। विल चेक, डेफिनेटली विल चेक, है ना. हाँ प्लीज, एंड मुझे मतलब किशोर दा से एक क्वेश्चन है कि आई लव योर कंटेंट मैन, आई लव योर कंटेंट आई एंड मतलब वो सनस्क्रीन वाले के लिए तो बहुत शुक्रिया एकदम, ठीक है। एंड मैं बहुत घबरा रहा हूँ, ठीक है, मेरे कॉन्वर्सेशन बहुत खराब है। मैं मेरे It's fine, it's fine. कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्या हुआ रितम कि भाई, आराम आई से सांस ले लो और बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. आई एम जस्ट स्टार्टिंग। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मतलब वो शॉर्ट फिल्म टाइप देखें, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाऊँ, ठीक है। मेरे को हम्म, अच्छा लगता है, मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊँ, मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ, काइंड ऑफ सिनेमा। एंड हम्म. मतलब मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। एंड मेरा अगर प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखे तो मैं अभी स्टूडेंट हूँ, एंड मैं मल्टीमीडिया का काम कर रहा हूँ, वीएफएक्स, सीजीआई, 3D, यही सब मैं सीख रहा हूँ। तो डिफरेंट बात है, तो यही सब एक साथ कैसे चलेगा, क्यों, क्या कर सकता हूँ, एंड क्या मैं कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकते हैं सिनेमा में, ऐसे कुछ। ओके, ठीक है, डेफिनेटली. किशोर, आप आंसर करना चाहोगे और यू वांट टू वेट फॉर हिम हिज टर्न टू कम? हाँ हाँ, like I'll be able to answer after I watch his content, right? तो ठीक है, डन डन yeah. डन. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको, है ना. दिस इज आई थिंक किसका था ये? अभिनव मिश्रा का कंटेंट है. लेट्स सी. Okay, I think it was a resort का video. Kishore, would you like Yeah, to? I think you should get like a girl model in the video. किशोर भाई एकदम ऑन पॉइंट बात कर लेते हैं. Best way to get Definitely views. भाई, मतलब having a girl in the video definitely helps get a lot of eyeballs, views. Also एक और चीज मैंने देखा है ना कि this kind of real estate videos perform really well क्योंकि भाई dopamine hit सबको चाहिए बहुत ज्यादा, and then the attention span is this much, so fast pace करना बहुत जरूरी है आजकल. You can do after experiment जिस तरह velocity edits, तो velocity edits पे you try playing with the kind of real estate, and then you will definitely work out. Use a very trendy song. The song was good, but I think वो थोड़ा पुराना हो गया अभी के टाइम के लिए. So I would want you to choose a better song. थोड़ा BPM ज्यादा होना चाहिए, tempo, and then उस पे आप अगर velocity edit करोगे, then definitely it's going to work out. Maybe try using house Yes. music. Definitely we can do it. Kishore, you have sent me another Aniket, I think this was that video only. Okay, we'll check out. We have another Preeti Moy ka video. Yes, I'll just share my screen. This looks like a storytelling reel, 9x16, 16x9 वाले format पे. Let's go. Okay, I don't really talk much about what I want, but like सोच के देखो, if there was a person जिसे तुम दुनिया की कोई भी चीज मांग सको, 1 मिनट पे आपके पास आ जाए. And आज अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता तो I would have asked for mornings which don't feel heavy. I want money that doesn't cost myself. I want to stop explaining why I am still trying. I want work that doesn't cost my free will. And if I ever got the chance, I would have asked for myself. Now tell me, if you had the chance, तुम क्या मांगते? Okay, I don't. एक तो इसको लाइक करते रहो पहले से, है ना. Okay, so Kishore, what is your feedback on this video? I think the second half of the video was better than the first half. The second half वाला part जहाँ वो बोल रहा था कि I want to do this, do that, maybe वो वाला part would have been better as a hook. I also feel the same thing क्योंकि सेकंड में ना इमोशन हिट होने लग गई. स्टार्टिंग में वो
I feel it missed something, some emotion or something like that. कि पहले तो चलो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. So storytelling videos में it's very important that you connect with the people first thing. So Yeah. maybe you can just do आगे पीछे थोड़ा चीजें, and I think it will work really well, है ना. Visually, it was really good. Visually it was very nice. Typography बहुत अच्छा करते हो आप. All of this are crazy. भाई भाई मतलब कंटिन्यू करो भाई, मैंने आपको लाइक भी करा हुआ है. आपको कुछ हेल्प चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, यू कैन डीएम एंड देन वी कैन टॉक अबाउट fonts and everything is so nice. Music selection is nice. And you have used the chorus part, which was very good. So overall, I think it was a really nice video, Kishore. What do you say? Yeah, I agree. Yeah. Saurav has a real question. Saurav is one of my student. Saurav bhai, are you there? Hello, sir. Nice to meet you Yeah. after a long time. Hello. Kishore. Yes. So, Yeah, I've been through all your videos. मुझे the one thing I've noticed is like you said कि आप पहले negative hook use करते हो to hook your audience, right? Yeah. Apart from that, rest of your videos, even if it is like 1 minute, 10 seconds long, बस आप बैठ के बात कर रहे हो. So what else do you use while writing strictly? Because you don't have visual hooks also. So what do you strictly follow while writing to add mini hooks in between? visual hooks to, like, it's not very apparent, but visual hooks है, like for example the fixing my cap wala thing, or like walking while talking. All of those things are visual hooks as well, but they are not very apparent, and that's the great thing about it, right? Like you don't even realize that there is a visual hook in the video and you are still watching it, right? So I would say like work on your visual hook. Second thing is, I think people like videos that are very raw and genuine nowadays. So when you are not really editing your videos a lot, or background itna acha nahi hai, it's just regular, the audio is also kind of chopped, I think people feel like okay, like maybe I should listen to him because he's talking about some deep stuff. So I think that also like helps my videos. And yeah, I think that's it. Or you asked about how I script, right? Very often I do one thing ki see, मैंने नेगेटिव हुक लिख लिया, मैंने इंफॉर्मेशन पार्ट लिख लिया, मैंने पर्सनल एग्जांपल ऐड कर दिया स्क्रिप्ट में, फिर कंक्लूजन लिखा, then the CTA, then I would take the whole script and put it into ChatGPT, and I asked ChatGPT that give me some more like killer hook ideas. Then I sometimes go through that as well. कभी कभी पसंद आता है, कभी कभी पसंद नहीं आता. Sometimes I go with a hook that ChatGPT gives me. Sometimes I go with one that I made myself, or sometimes I combine them. So ChatGPT helps a lot as well. Crazy. So you're not avoiding ChatGPT like a lot. No. Obviously, bro. I'm a tech guy, bro. I love AI. Crazy. Thank you. Yes, done. I think breaking down into small sentences is also very important, which I think you do. कि Yeah. एक सेंटेंस को ज्यादा लंबा मत करो ना. हाँ, definitely. Like, you have to try to convey your information in as short of a way as possible. Not always. कभी-कभी मैंने realize किया है कि to make your videos look more genuine, sometimes you have to put in like, suppose when I'm speaking, I say like a lot, so sometimes I try to add like, or मैं हिंदी में भी बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि I feel like then people connect with you. I try to like add 20 to 25%, keep it in Hindi. I try to keep it in Hindi, and especially like when a person who looks like me comes and talks in Hindi, right? That itself is also a visual hook, to be honest, right? So yeah, those are the kind of things I take advantage of. कि भाई मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ और बोलेगा, लेकिन ये अचानक से हिंदी कैसे बोलने लग गया. हाँ, लोग कमेंट भी करते हैं कि I didn't expect you to speak in Hindi, and when I saw that comment, I doubled down on it. Crazy भाई, जो चल रहा है उसको डबल डाउन करो. That's one of the most important part. I think you put it out very nicely कि भाई content को किस तरीके से हम स्क्रिप्ट कर सकते हैं. ओके, अरुणवा बरुआ हैज अ क्वेश्चन. विल टेक द क्वेश्चन नेक्स्ट. एक वीडियो रिव्यू कर लेते हैं उसके बाद, है ना अरुणवा? जस्ट remind me that you have to ask a question. Okay, we have the next video. It's by कौन है ये? I forgot. हर्ष का वीडियो है. Let's have a look at it. जिंदगी की पहली लिफ्ट जो ली मैंने ट्रक वाले भैया से. रात के 8 बजे थे और मैं था शोजा में घर 1964, और मुझे जाना था अपने हॉस्टल जो था तकरीबन 4 किलोमीटर. क्योंकि रात बहुत हो रही थी तो मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी. तभी एक कार आती है और
नहीं रोका। तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद मुझे दिखता है एक ट्रक, तो मुझे भरोसा था कि ये भी नहीं रुकने वाला। एक बार लिफ्ट मांग के देखते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? इस मोमेंट पर मुझे रियलाइज होता है कि जब हम उम्मीद हारते हैं तो कुछ ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड जो हमने सोचा नहीं होता, और ये आज के दिन का मेरा बेस्ट मोमेंट बन जाता है। बट एक बात बताता हूँ, मुझे उन भैया की शक्ल ही याद नहीं है। अगर ये रील उन भैया तक पहुंच जाती है तो थैंक यू भैया, आपने मेरे को बचा लिया, वरना मेरे को ठिठुरती हुई सर्दी में वहीं पे बितानी पड़ती हो रहा। संजय फिर से मेरी जिंदगी की पहली लिफ्ट जो ली मैंने ट्रक वाले भैया से। रात के 8 बजे थे और मैं था शोजा में घर 1964, और मुझे जाना था अपने हॉस्टल जो था तकरीबन 4 किलोमीटर। ओके, गॉट इट। लाइक इसमें अच्छे अच्छे हुक्स डालने के इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, ही कुड हैव स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग लाइक आज तो मैं किडनैप होते होते बच गया, समथिंग लाइक दैट, यू नो। लाइक द वीडियो इज इंटरेस्टिंग बट द वे ही started is not best way. Okay, like you can work on your hook skills. I will try to improve. Yeah. भाई Say something like so that people go, oh fuck, क्या होने वाला है अब? Like that should be the kind of question that people ask when they see the first 3 seconds of your video. Okay, got it. I have one more question कि Yes. एक्चुअली मैं ना इंस्टाग्राम पे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, जैसे तो स्टोरी टाइम था। Okay. अरे मेरे को लैग main टाइम ये हो है गया। कि एक बार जब मेरे एक और बार रिपीट करो हर्ष, थोड़ा लैग हो गया था। मैं कह रहा था एक्चुअली मैं ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, Okay. बट ये वाला जो वीडियो था ये था स्टोरी टाइम टाइप लाइव, थोड़ा सा कि लोग थोड़ा कनेक्ट करें कि ये क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में, क्यों मांग रहा है लिफ्ट ऐसा करके। तो मेरे मोस्टली वीडियोस थोड़े वैसे होते हैं ट्रैवल साइड, जैसे नीचे मैंने एक और लिंक पेस्ट किया है, तो वो थोड़े एडिट टाइप है जो गानों पे होते हैं, बट उसमें थोड़ा एडिटिंग और फॉन्ट वगैरह का डिफरेंट होता है। बट उन पे आई डोंट नो व्हाई उस पे व्यूज नहीं आते ज्यादा, लाइक 400 500 वही स्टक हो रखा है। और लाइक ऐसा भी नहीं कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आई थिंक 170 80 पोस्ट हो चुके हैं मेरे, बट वो पता नहीं फ्रीज है जाने क्या है, वो चीज मेरे को समझ नहीं आती। जैसे आप नीचे वाला वीडियो देख सकते हो, वो मतलब बेसिकली इस टाइप के होते हैं, आप एक बार चेक कर सकते हो। तुम्हारा हाईएस्ट व्यूज कितना आया है आज तक? एक वीडियो पे आया था 100 के, बट वो आई डोंट नो कि किसी ने ऐसा फेक व्यूज बढ़ा थे ना, क्योंकि उस पे जितने लाइक थे 112 थे, वो 112 ही थे, बट उस पे व्यूज दिखा रहा है 100 के है। पता नहीं, नॉट रियली श्योर बट ओके ठीक है। सेकंड हाईएस्ट किस में आया है? सेकंड हाईएस्ट 5000 और अच्छा ओके ओके ओके, दैट्स अ प्रॉब्लम। तुम अभी मतलब सिर्फ 2 फॉर्मेट्स ही ट्राई कर रहे हो, लाइक नहीं, ट्रैवलिंग मैंने उससे पहले मैं जिम भी कर चुका हूँ, और मैं मिक्स कंटेंट भी डाल चुका हूँ, मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किया। इससे पहले एक और अकाउंट था, मेरे को कहा किसी ने वो फ्रीज है, उस पर 80 पोस्ट किए थे, उस पर भी नहीं आता था, तो मैंने फिर ये अकाउंट बनाया। अभी इससे 180 हो चुके हैं, बट पता नहीं ये 500 600 के लगभग रुक जाता है वीडियो। अभी कोई कोई होता है जो 2-2.5 हजार मैक्स टू मैक्स मार के पहुंच जाएगा, जो एकदम चीप कंटेंट होगा। जैसे भी वो वाला चल रहा था कि मैंने ट्रैवल में थोड़ा वो लिखा था कि खुद HRTC में ट्रैवल करूंगा, बट उसको वोल्वो से नीचे कदम नहीं रखने दूंगा। थोड़ा नकली सा है, बट इस पे 2000 व्यू आए ऐसा अच्छा कर। अच्छा थोड़ा प्रीमियम साइड होगा ना, जैसे मैंने नीचे एक लिंक पेस्ट किया, वो थोड़ा सुंदर है देखने में, अपीलिंग है, उस पे आएगा ही नहीं 400 आएगा। मम्मा पापा ही कहाँ लोग कॉल करोगे पापा ने। बट अभी मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे अच्छा व्यूज आया, उस पे 30,000 आया। मेरा ब्लॉग था, मतलब वो डॉक्यूमेंट्री टाइप था, वो 17 मिनट्स का था, तो उसने मेरे चैनल को अच्छा पुश दिया। लाइक जब मैंने वो पोस्ट किया था 49 सब्सक्राइबर्स थे, अभी 950 हो गए हैं उस वीडियो की वजह से। यूट्यूब पे क्या है ना, यूट्यूब में लोगों का लाइक रिटेंशन कैपेबिलिटी, पेशेंस थोड़ा ज्यादा है यूट्यूब के ऑडियंस का। इंस्टाग्राम मतलब उनको बस स्क्रॉल करना है, ग्रैबिंग द अटेंशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड टू ग्रैब दैट अटेंशन तुम्हें हुक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स द थिंग दैट यू आर लैकिंग। एंड तुमने बोला कि तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ऑन जिम काइंड ऑफ वीडियोस, ट्रैवलिंग वीडियोस। I think like you should experiment not with different Niches, topics, but different formats. but different formats of videos.
I think Yeah. Kishore was supposed to say that. Yes. You नहीं can जिम वाला continue. मैं पहले डाल रहा था, अब तो मैंने कम्प्लीटली ऑफ कर दिया जिम वाला, क्योंकि मैं ट्रैवल पे शिफ्ट हो चुका हूँ। एक दो स्टोरी टाइम वाला डाला हुआ है, और मतलब ट्रैवल से रिलेटेड है, जैसे मैं ट्रिप्स होता हूँ उनके कट्स लगा के थोड़ा ऐसा स्टार्ट में कोई हुक डाल दूंगा कि लाइक हाउ आई सी माउंटेन्स या कुछ, या माई 9 to 5 सर्चिंग फॉर जॉब इज लाइक, ऐसा करके थोड़ा। मैंने तो नोटिस वो किया है तुमने अपने वीडियो में अपना चेहरा एक बार भी नहीं दिखाया है। इस वाली वीडियो में, हाँ, बाकी वीडियोस में दिखाते हो तुम। हाँ मुझे मतलब जैसे मैंने एक लिंक पेस्ट किया है, आप उस पर एक बार क्लिक करके देखो, लाइक नीचे वीडियो है, इंस्टाग्राम पे ही है। Is it a YouTube वाला thing? No. नहीं, यूट्यूब वाला वो फुल लेंथ का डॉक्यूमेंट्री, इंस्टाग्राम ही है, मतलब वो म्यूजिक पे है, जिस पे मेरे को उम्मीद होता है थोड़ा कि व्यूज आना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंडिंग म्यूजिक पे होता है ना। Okay, बट let's उसमें let's आते नहीं है। let's look at this. Da, da, da. जैसे कि फर्स्ट फ्रेम में ही ना, like if instead of a view of the mountains and writing the text, you could have been maybe taking a selfie video and petting a dog that you met on the mountains, or maybe hiking with your friend showing a thumbs up. Like, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज आ रहे हैं कि you can make it more dynamic, समझ रहे हो? लाइक Add मैं खुद बोल रहा more हूँ फर्स्ट ट्रेन पे। video, make it have more personality, if that makes sense. Yes. Also, Harsh, I would suggest एक और चीज, क्योंकि ना I think the page is a little dicey, is what I feel, है ना किशोर? Try opening a new page, stick to one niche, कि travel कर रहे हो travel करो, formats experiment करो भाई, है ना? और visual hook, जैसे कि I think we got one comment also, cleaning the camera and all, कि भाई visually कैसे hook कर सकते कि भाई देख मैं कहाँ पे हूँ, ऐसा करता हूँ तो दूसरी जगह आ जाता हूँ। So you need to play with the people mind कि भाई आगे कुछ तो होने वाला है, crazy होने वाला है। यहाँ पे I'm not waiting for something, and obviously this kind of videos work for certain creators जो इस niche में जिनकी चल जाती है already. But if you're starting out, it's very difficult for you to get a lot of followers using this. And copy जो होता है, the caption that you're writing is very important. It needs to be controversial, as Kishore said, controversial हो गया, या फिर जो सबको कुछ emotion trigger करे, that is very important. Yeah, definitely. Curiosity is a very important factor. You have to create curiosity in the minds of the people in the first 3 seconds. Yes. जैसे Yes. यूट्यूब, जैसे जो यूट्यूब है और सॉरी जैसे यूट्यूब और जो इंस्टाग्राम है, उसकी ऑडियंस आई थिंक काफी ज्यादा डिफरेंट है। लाइक Yes, इंस्टाग्राम पे मोस्टली लोग फन और एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे आई थिंक लोग थोड़ा टाइम लेके आते हैं कि देखते हैं इसने क्या बनाया है। हाँ, like YouTube में टाइम लेके आते हैं, Instagram हाँ, में तो मे बी शायद मेरे वीडियोस थोड़े स्लो पेस्ड हैं, दैट्स व्हाई, और थोड़ा हुक में लैग हो रहा है ना। Yes, Yes. yes. That you need to improve, and then I think everything is sorted only. Yeah. You know, done. Okay. And you can also do a lot of template edits. That will also might also work. Instagram पे क्या होता है, templates का ऑप्शन आता है कि कुछ भी ट्रेंड जा रहा है तो they have a template which is a very viral. तो उस template में if you can do fit in videos, I think that also will have more push, क्योंकि वो trending चीजों के ऊपर बनी हुई है. So कोई गाना चल रहा है तो हम इसे तोरी बतिया करके आई कैन थिंक ऑफ दैट, एंड उसका एक टेम्पलेट बनता है, तो उस टेम्पलेट पे कॉपी करके जस्ट ट्राई टू मेक समथिंग, इट विल डेफिनेटली वर्क आउट. अभी मेरे साथ थोड़ा उल्टा हुआ है, जैसे मोस्टली लोगों का होता है इंस्टाग्राम पे पहले ऑडियंस बनती है, फिर वो यूट्यूब पे शिफ्ट होती है, बट मेरा यूट्यूब का इंस्टाग्राम पे आ रहा है, मतलब ऑडियंस जो है। Which is the best thing that you can do. Yeah, Which is the exactly. best thing you can do, क्योंकि YouTube is the best gold mine भाई. सारे इंस्टाग्रामर को YouTube पे ऑडियंस पुल करने में बहुत टाइम लगता है, बट YouTube पे once you create a ये ऑडियंस, वो इंस्टाग्राम में फट से आ सकती है, कोई प्रॉब्लम. I think Rebel Kid का पहले YouTube में ऑडियंस आया था ना, then she came to Instagram. अगर आप पॉसिबल है तो आप एक बार मेरे यूट्यूब वाला वीडियो थोड़ा सा अगर रिव्यू करके बता सकते हो। हम रिव्यू कर सकते हैं, बट आई थिंक अदर पीपल आल्सो इन द लाइन, तो 3-4 अपन रिव्यू करके वी कैन मे बी इफ यू हैव द टाइम वी कैन डू इट, है ना? वरना यू कैन ऑब्वियसली डेफिनेटली सेंड योर वीडियोस टू मी, आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट आल्सो. ओके, नाउ अरुणवा बरुआ, आपका क्वेश्चन था, आई प्रॉमिस्ड यू कि आपका क्वेश्चन लेंगे आफ्टर द हर्ष वीडियोस. ओके, यू कैन स्पीक अप. Hello Arunava, are you there? हाँ. Yes. Hi.
Yes, अच्छा you are audible loud and clear. तो लाइक प्रीवियस में बात हुआ था कि वो आपने बताया था ना कि वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड मैंने बताया था कि वीडियो एडिटिंग भी सीख रहा हूँ। हाँ। तो अभी उसमें मुझे डॉक्यूमेंट्री टाइप से में भी इंटरेस्ट है, लाइक सिनेमैटिक टाइप का, मतलब खुद का जर्नी का, क्योंकि एवरी सबका जर्नी एक अलग अलग होता है ना। हाँ। तो उसमें पीपल देखने में इंटरेस्ट रखते हैं कि ये क्या कर रहा है। Yes. तो इसमें मतलब मैं सोच रहा था कि एज ए कि पहले किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे देखना चाहिए या पहले इंस्टाग्राम में ट्राई करता हूँ, देन उसके बाद यूट्यूब, मतलब प्लेटफॉर्म पे मैटर करूँ या फिर पहले ये क्वेश्चन था कि प्लेटफॉर्म पे मैटर करूँ क्या, मतलब यूट्यूब में लॉन्ग टर्म गेम होता है एंड यूट्यूब इंस्टाग्राम में क्या शॉर्ट शॉर्ट टाइम में देख सकते हैं क्या क्या जो मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ वो हो रहा है, देन उसके बाद यूट्यूब में ऐसा। Yes, Kishore, I would love to hear this आई opinion from you. थिंक स्टार्ट करने के लिए इंस्टाग्राम इज डेफिनेटली इजियर, तुम्हें कम टाइम लगेगा चीजें टेस्ट करने के लिए। यूट्यूब इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। मैंने भी क्रैक नहीं किया यूट्यूब, सो आई कांट रियली से कि व्हाट वर्क्स ओवर देयर। मैंने ट्राई किया यूट्यूब एंड लाइक द हाईएस्ट व्यू काउंट आई हैव ऑन यूट्यूब इज लाइक 80,000 व्यूज, और वो भी इवन दैट वीडियो वाज लाइक मैं बहुत एडिटिंग करके बना रहा था 15 मिनट्स लॉन्ग 20 मिनट्स लॉन्ग वीडियो। फिर मैंने एक 5 मिनट लॉन्ग वीडियो बनाया, मैं ऐसे ही कैमरा से मतलब फोन से ऐसे बात कर रहा था। इट वाज अ 5 मिनट वीडियो that went to like 80,000 views. So I don't know what works on YouTube, to be honest. But Instagram, I think it's way easier to start to. I would suggest Instagram से start करो। ठीक है। एंड वो लाइक मैं सोच रहा था कि वीडियो लाइक मुझे अगर कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, डॉक्यूमेंट मतलब जर्नी डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो उसमें मुझे ये फायदा है कि मतलब जो व्यूज का रिलेटेड है कि व्यूज भी आएंगे, उससे क्लाइंट्स भी अपॉर्चुनिटीज आने के भी चांसेस है। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें ध्यान रखना होता है कि जिससे कि मेरा मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा है कि नहीं, सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स का भी मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स उस टाइप का ही फॉर्मेट यूज करे या फिर डॉक्यूमेंटेशन टाइप के यूज करे जो मैं पर्सनल लाइफ में कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मतलब कुछ ध्यान तो तुम्हारा रखे। तुम्हारा गोल है कि तुम्हें क्लाइंट्स मिले एडिटिंग के लिए, राइट? हाँ वो भी है एंड पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड हो। अच्छा अच्छा, तब तो लाइक आई हैंग आउट विद अ यूट्यूबर कॉल रचित रू वेरी ऑफन। तो उसने बोला कि अभी यूट्यूब का रेवेन्यू एक्चुअली डाउन जा रहा है। सो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम यूट्यूब टू इंस्टाग्राम राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाई बट ही इज सेइंग दैट इट्स हैपनिंग। तो इंस्टाग्राम में स्टार्ट करने का दिस इज एक्चुअली अनदर वेरी गुड लाइक मोटिवेशन। बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं अभी इंस्टाग्राम में। सो सिर्फ रचित कार्ड के नाम ना भैया? रचित रू। रू, अच्छा। स्पेलिंग RA मैं चैट में डाल देता हूँ। रचित ध्रुव को तो जानो भाई, ही इज अ क्रेजी अच्छा, नहीं स्ट्रीमर। नहीं ये नहीं देखा था। अच्छा देखना ये चाहिए देखूंगा आपको बाद में। मजा आ जाएगा भाई, बहुत वो क्रेजी। यूट्यूब लाइव में उसके अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। यूट्यूब जस्ट नॉर्मल चैनल में अराउंड 6 मिलियन है। वो ट्विच में भी स्ट्रीम करता है। लाइक ही इज डूइंग वेरी गुड। He is doing very good, crazy भाई। कल ही I think I was watching some of his Twitch content to understand कि live कैसे जा सकते हैं and all of these things. he Crazy has a content. very good knowledge of streaming. Yes, okay. थोड़ा सा हटके है। I think this question is from Rishi Rajiv. If you are Rishi Rajiv, you can. He wants to ask something related to Web3, Kishore. I don't know what he's going to ask, but yeah, Rishi, you can open up your mic and then you can ask. Let's not take a lot of time because time की थोड़ी कमी है. We'll end up in 10-15 minutes. You know? Yes, Rishi, are you there? Rishi Rajiv. Hello. Okay, I think Rishi is not with us abhi. I think he has gone AFK. कोई नहीं. We will move on to the next video. It's by another creator. Let me just share my screen. Okay, I think this is by Ritam Mandal. I think you is really excited to show this video. Let's see what he has made. Let's go.
avec leur trémolo, balayé pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. क्रेजी भाई, क्रेजी भाई। मैं सच बताऊं, हाँ। मैंने ईयरफोन निकाल दिया बिकॉज मुझे डर लगने लग गया एक टाइम पे। मैं बहुत एम्बेरस फील कर रहा हूँ मुझे। भाई बहुत क्रेजी भाई। किशोर, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द वीडियो भाई? Like the video is very good from like an artist's point of view, but from an attention point of view, I think it's lacking. मैंने आपको बोला कि मतलब मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाना है, सिनेमा बनाना है, शॉर्ट फिल्म बनाना है, तो एंड मतलब लिखने में, मेरे को स्क्रिप्टिंग करने में, स्टोरी बोर्ड करने में, एडिटिंग करने में, शॉर्ट प्लान करने में, लोकेशन देखने में बहुत टाइम लगता है। एंड लाइक ये वीडियो करने में मेरे को मेरे भैया ने, मेरे दोस्तों ने हेल्प किया था, लाइटिंग एंड कैमरास। एंड भैया डीओपी का काम करते हैं फिल्म में। एंड यही कि मैं, और मेरे को क्वेश्चन ये है कि मैं क्या, जो मतलब 15 मिनट्स वाले डॉक्यूमेंट्री मेरे पास, तो मैं तो लिख रहा हूँ ऑलरेडी, स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, ये सब मैं क्या इंस्टाग्राम पे डालूं एंड क्या यूट्यूब पे एक साथ डाल सकता हूँ, एंड कैसे और बेटर कर सकता हूँ मैं इस चीज़ों को, एंड किस टाइप का शॉर्ट फिल्म कंटेंट एंड ऑल कैसा चलता है इंस्टाग्राम पे। मतलब मैं आई एम द स्टार्टिंग, एंड मैंने ये कल रात डाला था ये वीडियो, एंड बस 22 व्यूज आए हैं, एंड मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ काइंड ऑफ। एंड ये कि ओह माय गॉड, बहुत एम्बेरसिंग है। कैसा लगा वीडियो, मतलब 10 आउट ऑफ कितना देंगे आप दोनों, बताइए। Art wise, मैं बोलूँगा 6 out of 10, to be honest. Like don't take it in a negative way. और मैं इतना like I don't watch these kind of videos a lot, so it's a personal bias as well. And from an attention point of view, it was very bad. Like it was 2 out of 10. क्योंकि suppose ये video मेरे feed में आया, I would scroll away in 1 second, bro. हाँ, ये there is no incentive to keep watching the video till the end. Like that is the thing with creating content on Instagram, right? Like you can spend like hundreds of hours to create a video, but if you can't grab the attention of people, it won't go viral. Maybe this kind of video will actually perform better on YouTube, to be honest, in my opinion. Yes, I completely agree with what Kishore said. कि इंस्टाग्राम पे भाई लोग आर्ट देखना बहुत कम पसंद करते हैं। इवन दो अगर आपको ये टैप करना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्सपेरिमेंटेशन कि भाई वो ऐसा ऑडियंस ढूंढे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपके लिए कि जिसको ऐसी वीडियोस पसंद आती हो। यू कैन डू वन थिंग दो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक इट थोड़ा शॉर्ट, एंड मैंने जैसे बताया कि बिफोर आफ्टर वाला फॉर्मेट यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट कि व्हाट इज दिस गाय डूइंग विद दिस देने में। तो बाद में जब व्हेन यू स्टार्ट शोइंग ऑल ऑफ दिस, और द क्रेजी इफेक्ट जो था दरवाजा वाला, वो तो लास्ट में आ गया भाई। तो आई थिंक वहां तक थोड़ा जल्दी पहुंचोगे तो इंस्टाग्राम के लिए आपको अलग पैकेजिंग करनी पड़ेगी, और वो पैकेजिंग के साथ अगर आप चेंज करो, मे बी दिस माइट। सो बेसिकली थोड़ा क्रोनोलॉजिकल बनाना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और थोड़ा सा ना, मतलब मैं बोलूंगा कि लोगों को चाहिए कि क्यूरियोसिटी स्पार्क होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो देखूंगा मैं, मेरे को देखो मैंने मूवी के हिसाब से देखूंगा तो वो सही है, आर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री टाइप, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम कंटेंट के हिसाब से देखूंगा वो खराब लग रहा है। तो वो पैकेजिंग इंस्टाग्राम कंटेंट के हिसाब से यू नीड टू डू। तो फिर जैसे संजय ने बोला, यू कैन एक्चुअली मेक like behind the scenes kind of content for Instagram and then post the video on YouTube. Yes. So मतलब so BTS जो होगा वो मैं Instagram में डाल सकता हूँ, एंड उसके मतलब जो मेन वीडियो होगा रहेगा वो मैं YouTube पे डालूँ। हाँ, मतलब Instagram में भी डालना कोई दिक्कत नहीं है। ओके बट व्यूज आने के ज्यादा उस पे चांसेस है। वन थिंग यू कैन डू, सिंपल सा ये करो, ठीक है, बिहाइंड द सीन डाला वीडियो BTS प्लस शॉर्ट्स ऑफ
जो इफेक्ट क्रेजी वाले इफेक्ट है उसके हाँ मोन्टाज डाल हाँ दिया टक 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 टक, और तुम लिख सकते हो चेकआउट फुल वीडियो इन यूट्यूब या कुछ भी। अगर मैं मजाक में हटके तो मैंने वो वीडियोस बना के रखा है, मैं डाल सकता हूँ तो अभी डाल सकता हूँ। हाँ हाँ तो हाँ, डालो कैसे डालो वीडियोस भाई। बना सकते हो? दिस वीडियो टुक मी 20 आवर्स टू हाँ, मेक। वेट टिल द एंड भाई, हाँ ऐसे करके यूट्यूब पोर्ट्रेट भाई वो ओके फटेगी, क्योंकि बिहाइंड द सीन मैंने बनाया था एक बिहाइंड द सीन, ओके जिसमें वो दूर से ना मैं कैमरा फोन में कुछ लगा के थोड़ी सी दारू का एडिट, इट गॉट सम मिलियन व्यू, इट रियली वर्कड आउट, ओके, क्योंकि लोगों को जानना है कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा द क्यूरियोसिटी बेसिकली। है। यस यस। हाँ यस आई थिंक एंड यस एंड लास्ट लास्ट ये कि मतलब अगर मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊं कुछ चीजें का, लाइक आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ओके। सो यहाँ पर एक एक बहुत अच्छा चीज है, वो है सिल्क। यस बंगाल का सिल्क ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर से चला आ रहा है। यस तो यस मैं उसकी उस पे प्लान है मेरा कि मैं उसके ऊपर बनाऊं, क्योंकि वो अभी मतलब मतलब क्या बोलते हो, वो खत्म हो रहा है। वो एक जो प्रोफेशन है वो खत्म होने के कगार पे है। तो 15 मिनट तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्री मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल सकता हूँ, यूट्यूब पे भी, या फिर मत डालूं, नहीं डालूं इंस्टाग्राम पे। नहीं 15 मिनट का डालो वीडियो क्या। डालो, सब सब कुछ डालो, क्या चलेगा क्या नहीं ना, क्या नहीं चलेगा किसको पता है। ओके ओके ओके, आई थैंक यू, थिंक थैंक्स अ लॉट, या थैंक्स अ यस लॉट। यस 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 ऑलवेज मेक श्योर कि भाई आपका जो कंटेंट है ना वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से रिलेवेंट होना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, फिर वो क्यों बनाया गया कि हुक बनाओ पहले, फिर कुछ कंट्रोवर्सी बोलो, फिर सीटीए डालो, अब भाई वो इंस्टाग्राम का फॉर्मेट ऑडियंस बहुत ही गंदा ऑडियंस है। सत्यजीत राव ने एक बात कहा था कि इंडियन ऑडियंस इज अ बैकवर्ड ऑडियंस, ठीक है, मतलब वर्स्ट ऑडियंस मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में, क्योंकि इनको अजीब अजीब चीजें पसंद आता है, अजीब अजीब चीजें। यस डेफिनेटली भाई, तभी तो सारा जोशी चल रहा है। लेट्स नॉट गेट कंट्रोवर्शियल गाइस। नो कमेंट्स फ्रॉम माय साइड। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ये डेकोरेशन देखो गाइस, डेकोरेशन देखो। मेरे ओके मेरे मेरे दिमाग में ये यस, आइडिया नहीं था बीटीएस वाला। थैंक्स थैंक्स फॉर दैट, थैंक यू किशोर दा, थैंक यू संजय दा, थैंक यू डू या द या बीटीएस, फट जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है ओके, लास्ट वी विल टेक अ क्वेश्चन अच्छा फ्रॉम ऋषि भैया एक राजी। क्वेश्चन था। अच्छा अरुण हाँ, चलो बताओ, अच्छा इसके बता। बाद विल टेक हाँ मतलब ऋषि का इंस्टाग्राम क्वेश्चन। फॉर्मेट के लिए मतलब हुक क्या वो भी डॉक्यूमेंट्री में हो सकता है, होता है ना, कर सकते हैं, या फिर फुल्ली फुल्ली अनस्क्रिप्टेड? कर सकते हो 100%। जैसे कि सपोज जैसे उसका ये दरवाजा खोलने का पार्ट ना, वो स्टार्टिंग में डाल सकता था, उसके देन ही कुड हैव स्टार्टेड विद द वीडियो, समथिंग लाइक दैट। मतलब बेड पे लेटा हुआ है। हाँ 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 हाँ, देयर इज ऑलवेज अ वे, यू जस्ट हैव टू बी क्रिएटिव। अच्छा वो फोन से अगर शूट करो तो उसमें वायरलेस माइक अच्छा है या फिर वायर्ड, एंड कुछ रिकमेंडेशन? संजय विल बी एबल टू आंसर मैं दैट। देखो बजट नहीं है तो बोया का एक माइक आता है, BY M1 या जो भी लिखा हुआ लिखोगे 600-800 रुपए का आएगा। कहता माइक अगर आप बोलने का कुछ कर रहे हो, बोलने का नहीं है तो यू डोंट नीड इट, सो गेट द बोया माइक। मेरे 10 years के करियर पे आई स्टिल हैव द माइक, 2 माइक मेरे पास रखे हुए हैं, आई स्टिल यूज इट समटाइम्स, क्रेजी माइक। और उससे अगर आप नहीं बना सकते तो आप किसी भी चीज से नहीं बना सकते। Okay, last we'll take a question, Rishi Rajiv se. It's a Web3 wala question. I think Rishi is back here. So we'll take the question and then we'll wrap up the entire session. है ना? Rishi, you can open the mic and then you can ask the तो question. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible, यस। loud and clear, तो Rishi. किशोर जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि ऐसे कौन से आपके अजम्पशंस थे वेब3 को लेके जो इन द जर्नी वो रॉन्ग प्रूफ हुए हैं, और मतलब आप एक बिगिनर को क्या एडवाइस देना पसंद करेंगे, मतलब क्या सजेस्ट करेंगे एक बिगिनर को जो अभी जस्ट उसमें घुस रहा है? बिगिनर को मैं एडवाइस दूंगा कि पहले तो एक एक्स अकाउंट खोल लो, ट्विटर अकाउंट, और फिर इंस्टाग्राम से ज़्यादा एक्स में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग मी, यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग माय पार्टनर एबिल। मेरे कम्युनिटी में सारे लिंक्स हैं, एंड एक्चुअली द बेस्ट वे फॉर यू टू स्टार्ट इज जॉइन माय कम्युनिटी। वहाँ पे मैंने एक फ्री कोर्स डाला हुआ है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, दैट्स द बेस्ट वे। मैं एक्चुअली उसमें मेटावर्स में टाउनशिप डिजाइन करता हूँ और उसमें टोकनाइजेशन का, तो उसमें आप क्या सजेस्ट और क्या मतलब एडवाइस देना पसंद? यार मुझे तो प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा, ऐसे एडवाइस नहीं दे पाऊंगा मैं। ओके ओके। या जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम में या कम्युनिटी में आके मुझे डीएम कर देना, आई विल चेक इट आउट। या Okay, so एक last है. We'll just watch this video. Sir and our I just posted. Chiranjeev is also one of my students. तो वो देख लेते हैं and then we can
एंड दिस राइट एंड इसके बाद भाई कोई प्लीज मैसेज मत करना बिकॉज वी आल्सो हैव टू स्लीप एंड किशोर से मैंने हाफ एन आवर मांगा था एंड देन नाउ यू नहीं, ऑलरेडी it's fine, it's fine. मजा आ रहा है मुझे, to be honest. Yeah, it's ओके fine. ओके गाइस एक और लिखते हैं लेट्स राइट के ओ पी इन द चैट जिसको मजा आ रहा है जो भी यहाँ पे है सो दैट किशोर कैन फील द मोटिवेशन एंड द वाइब रितम ओपी लगा हर्ष के ओ पी ऋषि इस के ओ पी क्रेजी टेक फिक्स के ओ पी रोमित नैति के ओ पी गौरांग इस के ओ पी क्रेजी भाई ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो दिस इज बाय चिरंजीत I'll share my screen right now and here we go let's go. They say how you spend your day is how you spend your life. And at this point, I'm just wasting my life. It's 11th of December. The time is about 1 a.m. in the morning. And I'm still lying with full of regrets. What am I doing? What am I even doing with my life? It's been 1 month since I started this page. And I only posted 3 videos. I used to work out every single day. But now, I'm fucked. 2025 is almost about to end. And I have no idea what the fuck I did in this whole year. Okay. You saw the video? Yeah, even for this video, the ending line was better than how he started out, right? Yeah, like 2025 is about to end and I have no fucking idea what I'm going to do with my life. फिर बाकी का video start करो, it would have worked out better, I think. I think one takeaway is भाई लोग जब अपना वीडियो कंप्लीट करेंगे ना लास्ट वाला पार्ट जो भी है ना उसको उठा के आगे डाल दे भाई तो वो हो गया वहां पे आई थिंक 50% Structural problem हो रहा है. Videos are so good, but the way you are organizing the video is wrong. I think उस पे improve करेंगे हाँ. In hooks, like ऐसा सोचो कि if your video came to your feed while you are scrolling Instagram, would you watch it? If no, then you have to change the structure. Yes. I think one of the great inputs that you put वही वाला कि structure को ठीक करोगे तो then definitely we will definitely want to watch the video. So guys, with this we have come to an end of the session. But Kishore bhai, literally I really enjoyed the conversation that we had and matlab all the people who are here, I think you guys might have definitely got to learn something from Kishore. But before ending this, I would love to know Kishore ka experience of the entire thing, how you felt about this live session and जो videos आपने देखे. Yes, Kishore. Like this is like my first ऐसा कुछ कर रहा हूँ. And initially I was nervous. Like you are an amazing host, first of all. Thank you so much. And like this was so fun. Like I want to keep doing stuff like this in the future. Thank you so much for having me, man. This was really fun. Definitely. Thank you so much, Kishore. तो किशोर भाई बहुत मतलब busy रहता है. He keeps traveling. He recently went to, I think he went to Dubai, right? For Abu Dhabi for the Web3 conferences. So taking out time from him is very important, and I'm really happy कि भाई there's few people who are there who are really motivated to grow in your content journey and then stay in the live to understand. Obviously there are a lot of people who are not able to join because of some work XYZ, but Saturday ko raat ko time nikal ke you guys are joining this live is a very big testament of you guys having that कि भाई मेरे को करना है and मेरे को सीखना है कुछ, and वो time निकाल के देना is one of the best thing that you guys can do. And I think मुझे लगता है आप लोग यहाँ पे आ गए हो, you guys have already won the game. 50% you've already won the game. तो उससे बस आगे थोड़ा सा बेटर करना है, बहुत क्रेजी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं आगे लाइफ में. Obviously we'll have more sessions in the future, तो वहां पे आ जाएगा मजा. तो guys, thank you so much for joining us, and thank you so much Kishore for taking time out and giving such valuable information to all the people who are here. I think everyone has learned some or other thing from you. तो बहुत crazy लगा, बहुत मजा आया. Thank you. Good night guys. We will have more sessions in the future.